नेशनल पेपर लीक सेंटर में आपका स्वागत है। छात्रों की एजेंडी दिखा दी है और उनके बच्चों की कॉलेज फीस भी आ चुकी है। अब जिम्मेदारी आ गई है प्रिंटर के पास। कैश को किया लॉक, फोन को किया अनलॉक। क्या टेक्निक है, ओरिजिनल भी सेफ, मैसेजिंग भी एक्टिव। पूरी ईमानदारी से बेईमानी की है इन्होंने। वाह, टेक्नोलॉजी के साथ बेईमानी का अद्भुत मिश्रण दिखाते हुए बीजेपी का गुंडा है। విద్యార్థుల పైన చేసి ఏ విధంగా కొట్టారు. చాలా మంది విద్యార్థులు కూడా ఆత్మహత్య చేసుకొని చనిపోవడం జరిగింది. ఎటువంటి ఆ ఇష్యూ జరిగినాక కొట్లాడడం ద్వారా ఆ కేంద్ర మంత్రి రాజీనామా చేయడం జరిగింది. అదందరూ కూడా మన విద్యార్థుల విజయం. ఇంకో విషయం, ఇక్కడికి విచ్చేసిన పిసిసి ప్రెసిడెంట్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ అన్నారు కూడా ఒక విద్యార్థి నాయకుడిగా వారి జీవితాన్ని మొదలుపెట్టారు. ఎన్ఎస్యుఐ నుండి జీజీ కాలేజ్లో విద్యార్థి సంఘం నాయకుడిగా ఆయన రాజకీయ జీవితం మొదలైంది. ఫస్ట్ విద్యార్థుల సమస్యపైనే రాజకీయాలకు వచ్చి ఈరోజు ఈ స్థాయికి వచ్చారు. మనందరూ కూడా వారిని ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి. మనం అందరం కూడా ఒకసారి అన్నకు ఒకసారి క్లాప్ ద్వారా లేడీస్ ఇంకో 10 నిమిషాల్లో మన ప్రియతమ నాయకుడు రావించి మాట్లాడబోతా ఉన్నారు. కాబట్టి విద్యార్థులందరూ చక్కగా ఈ స్పీచ్ని వినాలని కోరుతున్నాను. Thank you for this wonderful welcome in Pune. Today,
not to give you a lecture, not to tell you what I think, not to say what you feel, to say what you think. And what I've done is I put a little framework, some ideas to allow you to think, express yourself, and we'll discuss some of these ideas with young ladies from the crowd this evening. So I'd like to first of all start by welcoming everybody. सबका मैं यहाँ स्वागत करता हूँ और पहली बार शायद मुझे बॉयज कम दिख रहे हैं या दिख ही नहीं रहे हैं और लड़कियां दिख रही हैं. The idea behind this evening is, as is written over there, break the cage. I'd first like to remind you of one thing. Can I do that? Now, all of you in your lives must have been told many things, nice things, bad things. Many of you must have felt scared. You feel scared sometimes on the street? You do? But I want you to remember one thing. If there's one thing that you remember from this evening, it is this: that every single one of you is unique in this universe. If I was to look for any one of you, I will not be able to find a replica of that person. You are unique, you are special, you are individual, and you have your own dream, your own vision for your life. Am I right or am I wrong? I'm right. Many times people ask me, what is India's biggest strength? And you get many answers when you ask this question. Somebody will say our economy. Somebody will say our military. Somebody will say our medical system. Somebody might even say our people. But I am very clear on what is India's biggest strength, our biggest asset. And that strength is 70 crore unique journeys, unique imaginations, unique dreams that the women of India's women, young, old, are India's biggest asset. Now, एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या है? Clearly, in childhood, a female must be subject to her father. Meaning, the Manusmriti says, in childhood, a female belongs to her father. In youth, she belongs to her husband. When her lord is dead, she belongs to her sons. A woman must never be independent. This is a direct quote from the Manusmriti. And these words are a shame, because these words should never ever have been spoken. The most... Hello, how are you? Hello. The biggest strength of this country is... Hello, I am Advocate Rama Prasad Zavre. I have recently graduated. I have noticed in the last 5 years that I spent taking my degree that women in my field are subjected to such stereotypes that my classmate would not be. They are given opportunities, networking opportunities, and even
cases being handed to them only because they're men and they don't have a family. It doesn't matter if they stay home or not. Also, I have heard from my senior that it is a waste spending money on my LLM only because after a few years I won't be practicing and I will be raising a family, and it's really sad to see that my degree is just diminished to a point in my biodata. So how, when this happens, when you're in an exam at work and you're being told that you're a second-class citizen, that your degree does not matter, a man's degree matters, your degree does not matter, how does it make you feel inside? What do you want to say to India, to your friends here, about how you feel? Because I'm sure a lot of them also feel the same way. Definitely. It's in me that I won't need to prove that I have that degree. I studied for it, I put my energy. 24/7 have to prove to a man that she is good enough. Fundamental question. Would you like to say something about that? Hello, my name is Dhyaneshwari. I'm from Pune, Maharashtra itself. I completed my Masters in Culture, Media and Governance from Jamia University, Delhi. And I lost my father before 3 years. And after that, he got a cancer. After that, there was so much family pressure, society pressure, community pressure. My dad was a sanitary worker. And I had a huge pressure. You have to do the relinquishment certificate, you have to submit the certificate. You will not, if I'm asking anything in a property or in anything, it's like I'm asking for it's not my right. I'm asking for the घर में जो भी सारी चीजें हैं उसमें मैं हिस्से मांग रही हूँ, हिस्सेदारी मैं कर रही हूँ. As a woman, I'm asking for a हिस्सा. हाँ, और as a like if is any other man, if I have my brother and it's his right. But if I'm asking, it's मैं हिस्सा मांग रही हूँ. If your brother is asking, yes, it's his right. Yeah. And if you are asking, मैं हिस्सेदारी कर रही हूँ. मैं हिस्सेदारी. Okay. Again, now I'm come back from Delhi and like there is a huge pressure for marriage, and guy want a girl who is look fair, educated, healthy, but he doesn't want the girl like me who wants to pursue her career. You're a very beautiful girl. What do you mean he doesn't want a girl like you? Thank you. But they want a girl like me, but they don't want like a girl who is who wants to pursue her career in journalism, in PR or any social where you connect with the people, or it has a social job. They don't want like girl like me. They want 9 to 5 girl who is doing office work. She will come back at 5. She will serve you she will cook for you. She will serve you food and everything. The girl like me who wants to go into the journalism field, who wants to go on the. But why would a man not be proud of a wife who goes out, works, is independent, is living her own vision, her own dream? Why is it that the man is uncomfortable with this idea? Then I think the man or his family would not be able to control on her. But why is this control so important for a man? Because always women treated as a secondary sex or human, they're not treated as an equal, or they're not treated as an equal human being or an equal citizen of this country, I feel. Do you think men feel they are superior to women? Yeah, definitely. Yes. They do? Yes, they do. So it's a mindset problem. Yeah, it's a mindset problem. It's a patriarchal problem. The way it's. And you come into contact every day of your life with this patriarchy. Yes. The roads are controlled by the patriarchy. Yes. Right? Yeah. The businesses are controlled by the patriarchy. The school education system is controlled by the patriarchy. There is a caste hierarchy. Yeah. So how do you feel about this? Like, I just wanted to treat my education, or I wanted to look at my education it's a dignified thing. I wanted to treat myself as a human being, not
not a secondary person or the citizen of this country. You get angry? Every day, every night. What Yes, is going on? How is this happening? yes, every day I got angry. Every night I started thinking about this, how it's like this. Every day, every night, in every table conversation, it's every time it's like, oh, you are the girl, you will get you are a girl, you will get everything. It's not about, oh, okay, you are educated, you have your own dreams, you have your own ideology, you can think, you have your own thoughts. It's not never like this. It's always like, you are a girl, you are good looking, so any man will get married to you and you will have a good life. Right. Yeah. Well, thank you. Yes. So, we came up. Okay. So, let's discuss a little bit about violence. Let's discuss a little bit about violence. ये जो लाइन है, कुछ हो गया तो, ये आप अपने को बोलती हो? बाहर जाएंगे तो कुछ हो गया तो, फैमिली मेंबर्स टेल यू उधर मत जाओ, कुछ हो जाएगा, राइट? देयर आर 3 तरीके का कंट्रोल है, 3 तरीके की हिंसा है, सॉरी। एक तो डायरेक्ट है, मैंने आपको पहली फोटो दिखाई, उसमें मैंने कहा कि 70 करोड़ journeys are there. First thing to understand is before they are born, पैदा होने से पहले हर साल 4.5 लाख लड़कियों की हत्या होती है। That is the first violence, पहली हिंसा। दूसरी हिंसा हरासमेंट। इस भीड़ में से 80% लड़कियों को कहीं ना कहीं हरास किया गया है, राइट? सड़क पे, बस पे, रेस्टोरेंट में, स्कूल में, कॉलेज में 80% महिलाओं को हरासमेंट किया जाता है। में से 6 महिलाओं को हिंदुस्तान में रेप किया जाता है। यह हुई डायरेक्ट फिजिकल वायलेंस। वायलेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी, 50% महिला एजुकेशन या काम को रिजेक्ट करती हैं सेफ्टी के कारण। हिंसा से बचने के लिए 50% महिला एजुकेशन बंद कर देती हैं या फिर जॉब छोड़ देती हैं। और आखिरी फाइनेंशियल हिंसा। क्यों? क्योंकि अगर आप एक महिला हो, एवरेज हिंदुस्तान की महिला को हर साल सेफ्टी पे 17,500 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ते हैं। ज्यादा कितना ज्यादा? इसका डबल। तो 3 तरीके की हिंसा है, एक तो डायरेक्ट हिंसा, एक फाइनेंशियल हिंसा और एक अपॉर्चुनिटी के कारण। तो पहला इंट्रैपमेंट है हिंसा। अब आपकी सुनेंगे। वेलकम। व्हाट्स योर नेम? तेजस्विनी। नमस्कार। सुचित्रा। मैत्री। इकोनॉमिक्स में मास्टर्स कर रही हूँ हड़पसर में SM जोशी कॉलेज में। जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं लड़कियों की, तो खुद के साथ होना और दूसरों के साथ होना बहुत अलग चीज़ है, उसमें ज़मीन आसमान फर्क है। जब हम पढ़ते हैं कि न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि लड़की के साथ लड़की हरेस्ट हुई, उसका रेप हुआ, तो वो बहुत अलग बात होती है कि हम सिर्फ फील करते हैं कि उसके साथ ये हुआ तो वो क्या फील कर रही होगी। जब खुद के साथ
8वीं कक्षा में थी। तो क्या हुआ, मैं 5 किलोमीटर गांव से दूर स्कूल में चल के जाती थी और उस टाइम गाड़ी वगैरह ऐसा कोई फैसिलिटी ज़्यादा नहीं थी। तो शाम को जब स्कूल छूटा तो मैं आई और चौराहे पर 3 लड़के थे। लिटरली वो बहुत ज़्यादा ड्रंक थे और उनका एज भी 25 साल से आगे था। तो कितने थे वो? 3 लोग थे और वो मैरिड थे और मेरे साइड वाले गांव के ही थे वो लड़के। जानते थे उनको? नहीं, हम जानते नहीं थे, लेकिन वो साइड वाले गांव के ही लड़के थे। तो क्या हुआ, उन लोगों ने हमें घेरा, मैं और मेरी दोस्त थी, और उन्होंने हमें छेड़ा। लिटरली मतलब पास आ रहे थे और ऐसे कमर को हाथ लगाना और हाथ लगाने के लिए आ रहे थे। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि ये क्या हो रहा है। तो उस टाइम पे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तो मैं भाग गई। तो मैंने अपने पापा से कहा। आपकी फ्रेंड भी भाग गई? हाँ, मेरी फ्रेंड मुझे छोड़ के भाग गई। तो क्या हुआ, मैंने अपने पापा से कहा कि पापा मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो वो हमारे साइड वाले गांव के लड़के थे। तो पापा ने क्या कहा कि हम कंप्लेन करेंगे, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करेंगे, लेकिन मैं नहीं आऊँगा, मम्मी को लेके जाओ। तो मैं मेरी मम्मी को लेके गई। क्यों? क्योंकि पापा का मतलब ऐसा वो सोचते हैं कि तुम एक महिला हो तो तुम्हारी माँ जितना तुम्हें जानती है उतना मैं नहीं जानता। तो जब एक लड़की पर बात आती है तब पापा भी माँ को आगे रखते हैं। तो हम पुलिस स्टेशन गए और कंप्लेन की और उनको शिक्षा मिली। उनको बहुत मारा गया, पीटा गया। उनको मारा? हाँ, उन लड़कों को मारा गया, पीटा गया। उसके बाद ना कि मेरे घर वाले, मेरा पूरा गांव मेरे अपोजिट खड़ा हुआ कि एक लड़की है और इसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो इसे पढ़ाओ मत, इसे घर में रखो और पढ़ाओ मत, क्योंकि इज्जत चली गई। तो चली गई? हाँ। तो पापा ने कहा कि नहीं, मैं मेरी बच्ची को पढ़ाऊंगा, और उन्होंने मुझे पढ़ाया, बल्कि पुणे में भेजा। और मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, तो अब पुणे में भी वैसा ही ना हो। तो मैं 2022 में पुणे में आई। तो जब मैं लाइब्रेरी से आई हॉस्टल में, तो बस PMPL में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मैं गिरने वाली थी। तो एक लड़के ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे खींचा और स्टेबल किया, और आगे एक महिला खड़ी थी, उसके बीच में मैं, और आगे मेरे पीछे वो लड़का खड़ा था। तो लिटरली उस लड़के ने मेरी कमर के इस कोने से लेकर इस कोने तक में हाथ लगाया और मुझे पीछे खींचा, और मैं डर गई। मैंने तुरंत में पीछे मुड़ी और उसके कान के नीचे बजाया, और वह सिचुएशन ये थी सर कि वहाँ पर जो लड़कियाँ थी वो कुछ नहीं बोली। और अब जब मैं स्टेबल हुई कि अब नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, तो अभी रिसेंटली पिछले वीक में मैं अपने घर से वसई से पुणे आई। पुणे स्टेशन से ट्रेन पर मैं उतरी और वहाँ पर एक ड्रंक आदमी था, वो सामने से आया और लिटरली मेरे यहाँ पर ब्रेस्ट के नीचे छुआ उसने। तो मैंने उसके हाथ को पकड़ा और उसे मारा। वहाँ भी महिलाएं थी, वहाँ पे भी लड़कियाँ थी, महिलाएं थी, लेकिन वहाँ भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। मतलब ऐसी सिचुएशन है हमारे इंडिया में, महाराष्ट्र में, कि लड़की के साथ ऐसा होता है तो भी कुछ लड़के होते हैं, लड़कियाँ होती हैं, वो अपनी बहनों की तरफ नहीं बोलती, वो सिर्फ तमाशा देखती रहती है। तो मुझे यही सबसे बोलना है कि बहनों, भाइयों, प्लीज सपोर्ट करो और अपने सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आ रही होगी तो प्लीज सपोर्ट करो और उसको बचाओ। मेरे साथ जो हुआ वो किसी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। और मैं बताना चाहूँगी सर कि अभी जो मेरे साथ जो इंसिडेंट्स हुए, तो मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ लड़कों से। मेरे मन में एक डर बैठा हुआ है कि लड़के सब ऐसे ही होते हैं। I am currently a psychology student studying in Pune University, and I travel by public transportation literally almost every single day, and I feel like safety is becoming a very big concern because you are I feel I coming from an urban city is very probably I don't have to give up my education because of my safety, but the girls from the rural area region have to their parents
prefer that if they have to send their female children out to study, because villages don't really have schools for higher education, they prefer their son goes outside instead of their daughters because it is really safe. And I feel if education, the access to education has to become so difficult, I think it is becoming a barrier for education. Why do you think this mindset, ये जो mindset है कि बेटे को एजुकेट करना है, बेटी को एजुकेट नहीं करना है, बेटा जॉब कर सकता है, बेटी को जॉब नहीं करना है, ये माइंडसेट आता कहाँ से? I think the social norms created around कि लड़के कमा के खिला देंगे माँ बाप को, लड़कियों को तो शादी करके जाना है, तो लड़की का करेंगे क्या? Okay, thank you. Because they want to enjoy the patriarchal control over them. स्टेडियम ఉన్నట్టుంది. उसके अलावा सेकंड थिंग ये कि my parents are very supportive. उन्होंने इतना कुछ होने के बाद भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है पुणे पढ़ने के लिए भेजा। पुणे में मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, तो मुझे क्लासेस जाने के लिए, कोचिंग क्लासेस जाने के लिए पुणे वालों के लिए भी तो कुछ खास मैसेज है। पुणे म्हणजे प्रेम। थैंक यू। पुणे म्हणजे प्रेम। क्या बात है। थोड़ी और पुणे म्हणजे प्रेम। लव यू ऑल। थैंक यू। गुड नाइट। Thank you girls. Thank you so much. Thank you. Let's get a picture with sir. एक कल्चरल शॉक, हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती? क्या बेहतरीन दिन रहा है सारे लड़कों